Hello guys, welcome in my biometric channel. We will discuss about the cause of the extinction of the biodiversity. Yeah, what are the threats from which the biodiversity is harmful link. First is introduction. Extinction is the complete elimination of the build species. It is actually it it is a natural but slow process. But due to unplanned activity of man, the rate of decline of wildlife has been particularly rapid in last 100 year. How? जिस तरह जो मैन है, जो ह्यूमन है, अगर वो अनप्लान एक्टिविटी जो है, अनप्लान एक्टिविटी जो है उसकी अनप्लान है, तो इससे क्या हो रहा है, रेट जो है विल्ड लाइफ का इट्स गोइंग डिक्रीज. तो लास्ट सिंस लास्ट 100 ईयर से यह ऐसा हो रहा है. इंडिया जो है, इंडिया अलोन हैज़ टोटल 459 थ्रेटेड स्पीसीज, but presently it's maybe more or less, of which include 86 mammal, 70 bird, 25 reptile, 3 amphibian, 8 fish, 23 invertebrates and 244 plants. So इंडिया में 459 थ्रेटेड स्पीसीज है, जिसमें से कि ये मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन, इन्वर्टेब्रेट सब जो है थ्रेटेड स्पीसीज के ही में हैं. जो द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम लाइक बे एंड कोली हिल्स, जीपोर ट्रैक्ट, Bhitarkanika, Lakshadweep Island, Arunachal Pradesh, Mizoram is under the threat because of conflict between food security of population, living organism therein and biodiversity conservation. तो ज़्यादातर इन जो ये कोली हिल्स, जीपोर ट्रैक्ट, भिटारकनिका ऐसी जगहों पे ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, थ्रेट है. वाई? बिकॉज फूड सिक्योरिटी जो है, पॉपुलेशन इतनी है कि फूड पूरा ही नहीं हो पाता, जिस कारण जो है पॉपुलेशन जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है एक्सटिंक्ट हो रही है. तो बीच जो मेन फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, वो हम अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन. जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हैबिटेट है, उसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है. हाउ? कैसे? पोल्यूशन इज नेचुरल या मैन मेड हो. टू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, आर्टिफिशियल एंड एंथ्रोपोजेनिक. तो पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल इज मोस्ट बिग प्रॉब्लम, which leading to the degradation of a number of important habitats. Second most important is deforestation. Deforestation, as we know, where is no forest occurrence is nil, there is diversity will be nil. Like in Tripura state, in eastern states, deforestation of dense forest is posing a serious threat to the precious barbs leaf monkey, better known as speculated monkey or Aijavanti bandar shy monkey. Main cause of its extinction are increasing destruction of its habitat by deforestation coupled with zoom and shifting cultivation. What is zoom is and shifting cultivation means, if one place has soil fertility has less, what will be do, it will be shift from that place and into another place. And other factor is soil erosion
agriculture expansion, overgrazing, increasing urbanization is may can cause the destruction of habitat and fragmentation. Also, forest fire is also major cause. Development work like dam, reservoir, roads, railway lines, croplands, industry mines, dam blocks spawning, and migration of the certain fish can be cause the habitat and fragmentation destruct. Cleanliness drives adversely affect the natural sequencer like cathrates, California conducts. Another is another is it decrease the hiding place of animal. It increase the chance of their predation. Destruction of habitat is very serious threat to outbuild life because it decrease the hiding place of animal and it increase the chance of their predation. Forest area, as we know, it's surrounded by urban colony, orchard, plantation, cropland, fragmented habitat. Due to this, species present in deeper areas start disappearing. Hippopotamus amphibius is an endangered species and it is red list is primarily due to habitat loss and its over exploitation for meat and ivory. So हिपोपोटामस स्पीसीज था, अब वो क्या है एंडेंजर स्पीसीज में क्या है, रेड लिस्ट कैटेगरी में क्या है आ चुका है. Fragmentation is process of reduction of the habitat into smaller and scattered area. It is also main cause of the habitat destruction. Or due to habitat fragmentation, barriers are created which limit the potential of species for proper dispersal and colonization. This lead to formation of smaller populations which are not able to sustain. Yes, it is when there is a reduced the habitat, it can be lead formation of smaller population due to migrate from one place to another. Migratory bird, yes, migratory bird do not move to scatter seasonal poaches. Species become more vulnerable to wind, fire, and predator. To show species can be vulnerable due to the fragmentation. Indiscriminate hunting. Yes. Second is indiscriminate hunting. Hunting can cause the can extinct the biodiversity. How? Barbarous of use of animal like food, hide, musk, tusk, or recreational purpose. Extinction of the dodo bird. Example is dodo bird is killed due to the beautiful feather. Extinction of cheetah, fastest mammal of India. बट अब प्रेजेंटली कुन्नू में, अब कुन्नू जो कि नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में है, जो कि क्या है एक वहाँ पे अभी चार चीते जो कि ऑस्ट्रेलिया से मंगाए थे, तो वो अभी मंगाए हैं क्योंकि बिकॉज देर इज़ नो चीता इन इंडिया. चीता बिल्कुल नहीं था इंडिया में. सो चीता क्या है अभी हाल में प्रेजेंटली कुन्नू में पाया जाता है. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू save the wildlife. Many species of fish, mollusca, sea turtle, whale are facing extinction. Introduction of exotic species. Another sorry guys, Asian elephant is also face the danger of extermination because of the
lack of because of the poaching, शिकार हो रहा है, लैक ऑफ कंसर्न भाई, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंसर्न नहीं कर रही है एशियन एलिफेंट की ओर टू चेक द ट्रैफिकिंग ऑफ विल्ड एनिमल। सो ड्यू टू विच रीजन कि एशियन एलिफेंट क्या है, डेंजर होने पर क्या है, कार है। विल्ड लाइफ सोसाइटी हैज Odisha has reported that 57 elephants have been shot dead by poacher from Ivory between 92 to 96. District action by Rajasthan government coupled with quick judicial pronouncement. So it was not no need. So it's only Asian elephant which are danger. So third is introduction of exotic species is also is cause threat to survival of many native species like Periplantia, American cockroach is extinct due to we when we bring the other species from that in among these many species, so it can be threatening. Exotic trout and basses are affected many species in USA। और ट्रोट जैसे बास जो है मैंने के यूएसए में एक्सोटिक हो रहे हैं, तो जो यूएसए में जो भी स्पीसीज है उस पर क्या वो अफेक्टिंग हो रही है। यूपेट्रियम odoratum, यूपेट्रियम odoratum is exotic species. It replaces the Tectona grandis in northeastern India. Parthenium hystrophorus carrot grass has replaced the herb and shrub in open space. We have seen as many in many area like booty जो उसमें जो कि ब्लू फ्लावर होते हैं, दे एक अगर वो फैल जाती है पूरी जगह पर तो वहाँ पे ग्रास क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लाइकवाइज सो इट इज़ कैन बी एक्सोटिक स्पीसीज is good and rapid when introduced in island of Pacific and Indian Ocean, destroying the swirl plant and bird and reptile. Neel perch is exotic predatory fish introduced in Lake of Victoria of South Africa has eliminated the native small cichlid fish species which were endemic to this lake. So guys, here is given any example which is so many importance which can be you read from here. So lantana camera is also a plant now has entered into the forest and seriously compared with the native species growing there. So it was जो एक्सोटिक स्पीसीज के बारे में था जो कि कैन बी कॉज थ्रेटिंग स्पीसीज। फोर्थ वन इज ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि हम क्या करते हैं, शिकार करते हैं, फिशिंग का क्या करते हैं, हम शिकार करते हैं, कोई एनिमल होते हैं उनका शिकार करते हैं। अगर ओवर एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं तो फिर तो it can be threat to the that species। disturbance in migratory route of animal like fish due to construction of dam। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं अब तो, काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी, अब तो डैम काफ़ी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और जैसे जैसे डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जो माइग्रेटरी फिशेज होती है, माइग्रेटरी जो वाटर के पानी में पाई जाती है माइग्रेटरी स्पीसीज, उस पर भी क्या होती है, डिस्टर्ब हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड इन इंक्रीजली स्केयर द एनिमल प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, डेकोरेशन, म्यूजियम स्पेसिमेन। इट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल मस्क डियर एंड ग्रेट वन हॉर्न रिनोसरोस। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्पीसीज जो है क्या हो रही है, थ्रेट हो रही है। लैक ऑफ एजुकेशन, ऑफिशियल लैक्सिटी एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन इज जो कि नेचुरल है, सॉरी आर्टिफिशियल है, जो कि हम DDT
अपने फील्ड में यूज़ करते हैं, पीसीबी हो गया, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, फंजिसाइड हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। सो सब क्या है, इट क्या होता है कि जो फंजिसाइड जब कोई अगर रिवर वावर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, सो वहाँ की जो पानी में पाई जाने वाली स्पीसीज है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, या उनका जो साइकिल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और इट कैन बी कॉज थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। लेड इज आल्सो पॉइजनिंग। जो लेड हम यूज़ कर रहे हैं, लेड एज बी नो, अगर ये अगर ह्यूमन काइंड में भी, मानव में भी चला जाए तो ये इट कैन बी कॉज अनीमिया डिजीज। सो बॉटम फीडिंग वाटर बर्ड लाइक अ डक ingest shotgun pellet that fall into the lake marshes of die every year due to lead poisoning. So environment pollution is also a big major problem in threatening of biodiversity. एक्सटिंक्शन स्पीसीज, जो एक्सटिंक्शन स्पीसीज कौन कौन सी होगी गाइस? नेचुरल एक्सटिंक्शन, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. Natural extinction, some species that disappear due to the change in environment and still other appear. It's natural, which are adapted to change environment. Many species we have seen that environment is presently is changing so fast, and so many species is not be adapted, or we can say cannot be adapted in change environment, or some species can be adapt in changing environment. So this can so we can say natural extinction के थ्रू भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है या हो रही है. मास एक्सटिंक्शन जैसे कोई भूकंप आ रहे हैं, कोई तूफान आ रहे हैं, कोई चक्रवात आ रहे हैं, जैसे many times what species disappear due to the catastrophes. This has occurred number of the time in geological history. जैसे कि डायनासोर का एग्जाम्पल है यहाँ पे. डायनासोर का एग्जाम्पल है जो है डायनासोर एग्जाम्पल जो कि जुरासिक पीरियड में पाए गए थे, पर जो क्रिटेशियस पीरियड जब आया था तो उस समय ये एग्जिस्ट हो गए थे. 50% ऑफ एग्जिस्टिंग एट द क्रिटेशियस पीरियड. सो जैसे जैसे पीरियड आते गए तो डायनासोर की जो पॉपुलेशन थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, और आज डायनासोर का कोई भी नामो निशान नहीं है, और सिर्फ म्यूज़ियम में ही डायनासोर पाए जाते हैं. Anthropogenic extinction is also a big factor, can be cause threatening of biodiversity. So due to human interference, and human interference is also big. So due to human interference is directly loss of the biodiversity is taking place. This lead to disappearance of the number of species take place within short span of time. The tropical forest are losing 14,000 to 40,000 species per year. Why? Because we are using today presently today day by day plant का यूज़ हो रहा है. Many plant is cutting and using for timber, food, for making the recreational purpose, or shipping, for making ship. So many variety use making from the forest. So forest are जो है forest are cutting due to the anthropogenic extinction. So it I hope it you have likes all
this topic about the extinction of the species biodiversity. So today, so please subscribe my channel, biometrics. Thank you so much.